तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली सबसे पहले मैं श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को डिस्कस करूँगा। मैं सबसे पहले इस टॉपिक का मैं हेडिंग डाल देता हूँ। तो क्या है ये, क्या हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं? श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, करेक्ट। तो मैं लिख दे रहा हूँ श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग टाइम डिपेंडेंट को भी डिस्कस करेंगे। ओके चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो इसमें क्या होगा कि जैसा मैंने पहले ही कहा कि अब क्या होता है कि जैसे कोई भी वेव को हम लोग y = a sin ओमेगा t के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसा ही हम लोग किसी भी वेव को मतलब कि कोई भी वेव है तो उसको हम लोग y = a sin ओमेगा t के फॉर्म में जैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या था, y इज़ आउटपुट फंक्शन, तो हम लोग आउटपुट फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो आउटपुट फंक्शन हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइप में हम लोग शाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए वैसे भी, क्योंकि जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। सपोज कोई देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा लिख सकते हो तुम, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर साई, जहाँ पर z होगा यहाँ पर साई इज इक्वल्स टू, तुम लिखते थे, अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो a जो यहाँ पर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड होता है इनटू e⁻ आयोटा थीटा। अब थीटा क्या होता है, आप अगर रिमेंबर करेंगे या फिर रिकॉल करेंगे जो आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ था कि थीटा होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स। बट यहाँ पर क्या होगा कि देखो थीटा कैन बी a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स और a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, जैसा मैंने पहले किया, और दूसरा a sin के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो मैं थीटा को के एक्स माइनस ओमेगा टी अज्यूम करके स्टार्ट कर रहा हूँ। तो a इंटू e⁻ के एक्स आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज़ माई फर्स्ट वेव इक्वेशन। नाउ हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फॉर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। हम लोग इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक x है और एक t है, तो हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली टू गेट टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना, तो डेल साई बाय डेल x विद रिस्पेक्ट टू x इज ऑफकोर्स। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a कॉमन आ जाएगा क्योंकि a कांस्टेंट है। e का डेरिवेटिव e⁻f(x) का डेरिवेटिव होता है e⁻f(x) ओनली के एक्स माइनस ओमेगा टी। बट हम लोग इंटरनल फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इंटरनल फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो i कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, kx। अब यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव पार्शियली डेरिवेट करेंगे तो k आएगा। एंड माइनस ओमेगा टी का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे, अगर आप माइनस ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो यहाँ से वी हैव ऑब्टेन्ड डेल साई बाय डेल एक्स एज, हम लोग क्या लिख सकते हैं, i इंटू a इंटू के इंटू e⁻ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू i इंटू के इंटू a इंटू e⁻ के एक्स माइनस ओमेगा टी, आयोटा इंटू के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखिए आपको ये दिख रहा है कि दिस इज ओरिजिनल योर साई फंक्शन। ओके, हियर साई वॉज a इंटू e⁻ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पर भी a इंटू e⁻ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा। तो इसको मैं साई अगेन लिख सकता हूँ। अगेन आप वैसे भी प्रोसीड कर सकते हैं, बट मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, ताकि आपका सेकंड इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करना है बेसिकली, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। दिस इनटू साई। नाउ अगेन आई एम डिफ्रेंशिएटिंग दिस वन पार्शियली, ऑफकोर्स पार्शियली मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। अगेन आई एम पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग दिस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो व्हाट वी विल गेट इज d2 साई बाय dx2
is I into k into del psi by del x. Again, correct? Now suppose I am giving this one as equation number 1, then del psi by del x, the value of del psi by del x we have obtained in equation number 1. So I am substituting that value over here. तो मुझे क्या मिलेगा is I into k into this value, which is I into k into psi, correct? Now I can write this as del 2 psi by del x2 is equals to I square k square into psi. Therefore now this is what? This is our del 2 psi by del x2. आप सबको मालूम है आई स्क्वायर होता क्या है? आई स्क्वायर होता है -1. -1 इंटू के इज माइनस के स्क्वायर इंटू साई, करेक्ट? नाउ आई एम गिविंग इट एज इक्वेशन नंबर 2. ओके फ्रेंड, नाउ अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि अब हम लोग कुछ आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे. जैसे यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा चीज़ आई है साई के अलावा, वो है के. तो हम लोग के की वैल्यू को यूज़ करेंगे. के की वैल्यू हम लोग को मालूम है, सिंस वी नो दैट व्हाट के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा, करेक्ट है? अब के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा है, तो मैं इस के की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा. ओके, के की वैल्यू कहाँ पर सब्सटीट्यूट करूंगा? इक्वेशन नंबर 2 में. बट उससे पहले हम लोग एक और आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, दैट इज़ लैम्बडा की वैल्यू. आप सबको मालूम है लैम्बडा की वैल्यू क्या होती है? बाय योर लाइक फ्रॉम प्लैंक्स इक्वेशन हम लोग को मालूम है लैम्बडा की वैल्यू होती है प्लैंक्स इक्वेशन से, वो होती है h बाय p, करेक्ट? अब मैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? ध्यान से देखिएगा. वी वुड बी गेटिंग लैम्बडा इज इक्वल्स टू, सॉरी, के इज इक्वल्स टू, दिस इज योर के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्बडा ओवर हियर, h बाय p, करेक्ट? तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? ध्यान से देखना. यहाँ पर मुझे मिलेगा के की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे मिलेगा के इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू पी डिवाइडेड बाय एच, करेक्ट? सो नाउ आई वुड बी यूजिंग दिस वैल्यू in equation number 2, correct? So let us substitute this value in equation number 2. So what we will be getting is d2 psi by dx2 is equals to minus 2 pi by h into p the whole square into psi, correct? तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू, सपोज आई एम टेकिंग h अपॉन 2 पाई एज h क्रॉस, because this 2 pi would be always be coming in all the expressions. That is why for simplification such that we cannot we should not write this 2 pi again and again. So I am taking this as h cross. So ये क्या हो जाएगा? p by h cross होल स्क्वायर इंटू साई, करेक्ट है? सो नाउ सपोज आई एम गिविंग दिस एज इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट? नाउ आई वुड बी रिप्लेसिंग दिस p which is momentum by some energy terms, like we know that kinetic energy is equals to half mv square, which is also equals to half, suppose I am multiplying numerator and denominator by m, sum of
you may get got why I have multiplied this one, mv the whole square divided by m. So this is nothing but mv is p, so p square divided by 2m is काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट है. नाउ तो p स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल गई है यहाँ से 2m टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सपोज ओके, suppose this is equation number 4. I would definitely be using this one in my equation number 3 by substituting, but before that मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ कि मुझे मालूम है टोटल एनर्जी होती क्या है. टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो I can write kinetic energy as total energy minus V. Therefore, kinetic energy can also be written as, suppose total energy is, suppose I am representing it by E minus V. Okay, this is your equation number 5. So, from equation 3, 4 and 5, we can write what? We can write this thing. From equation 3, 4 and 5, we can write what? d2 psi by dx2 is equals to what? P square. I am replacing it by 2m and putting the value of kinetic energy from here. So I would be writing as 2m E minus V divided by h cross the whole square into psi. करेक्ट. इसमें कोई डाउट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए. दिस इज सपोज equation number 6. Basically I am not going to name this as an equation because I am deriving it further. So हम लोग नेक्स्ट पेज पर इसको प्रोसीड करेंगे. So जैसा कि आपने लास्ट वाले इसमें लिखा है, तो इसमें यहाँ पर मैं इसी को यूज़ करूँगा बेसिकली. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, सपोज आई एम शिफ्टिंग इट लिटिल बिट डाउनवर्ड. तो क्या हो जाएगा d2 psi, suppose from here, see over here, this is this constant term I am replacing over here, means 2m by h square I am shifting to the left side. So what we will get is h bar, can you see, yeah, h bar the whole square, h bar the whole square into, sorry, divided by 2m minus sign of course into d2 psi by dx2 is equals to E minus V times psi. So we can also rewrite it as minus h bar whole square divided by 2m into d2 psi by dx2 is equals to E psi minus V psi. So we can write it as minus h cross whole square divided by 2m into d2 psi by dx2. I am taking this V psi to the left side. Okay, so it would be V psi is equals to E psi. करेक्ट है. अब देखो क्या होगा. I think this one is your equation. This is our time independent Schrodinger equation. करेक्ट है. Because in this equation you cannot get, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक भी टाइम कंटेनिंग टर्म्स नहीं है. So this would be your required answer. Let me highlight this one.
So this is your time independent Schrodinger equation. सपोज अब मुझे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन भी डिराइव करना है. सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, because I would be using this equation while deriving my time dependent Schrodinger equation. So let me put the heading of time dependent Schrodinger equation. तो यहाँ पर मुझे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन डिराइव करना होगा. श्रोडिंजर इक्वेशन. ओके फ्रेंड्स, तो क्या होगा इसमें, अगेन सेम वही जो इनिशियल हम लोग ने फंक्शन लिया था साई, वो वही लेंगे. साई इज इक्वल्स टू व्हाट, ए इंटू ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी. ठीक है. Now this time I would be in previous case I have differentiated this function with respect to x. Now I would be differentiating, or rather partially differentiating this function with respect to time. Okay, so del psi by del t is equals to a into e to the power iota kx minus omega t. This into, since we are differentiating this one with respect to time, so kx would vanish out, तो kx चला जाएगा और remaining term would be omega t. Since omega t is there is one term for time, so this would be 0 minus omega. Correct? Therefore what we will get is del psi by del t is equals to minus, sorry, there would be iota as well because iota is constant now. So I into omega into a into e to the power iota kx minus omega t. Correct? Any doubt? No. So therefore we can write it as minus I omega times what it is, a into e to the power iota kx minus omega t is what? This is your psi only. So we have written is psi. This is your equation number, suppose I am giving it equation number 2 because we have given this one as equation number 1. Now we know from our now we have got here I am not going to differentiate it 2 times. So from energy of photon relation we have what it is, energy of photon. Now you tell me what is the energy of photon given by, with what relation? So it is given by E is equals to h mu. Correct? In this is the energy which is obtained, which is contained by an photon. So suppose I am multiplying and dividing numerator and denominator by 2 pi. So what we will get is, आपको मालूम भी होगा कि मैंने 2 पाई से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्या है कि h बाई 2 पाई इज h क्रॉस, और इस इक्वेशन में भी मुझे h क्रॉस है तो मैं इसलिए इसको h क्रॉस किया इंटू 2 पाई इंटू म्यू. करेक्ट? और सबको मालूम है 2 पाई म्यू होता क्या है. 2 पाई म्यू, व्हाट इज म्यू? म्यू इज f, दैट इज फ्रीक्वेंसी, एंड इफ इट इज 2 पाई f then we know this very well. What is 2 pi f? 2 pi f is nothing but your angular frequency. Correct? Now since we need I into omega, so I would be pre-multiplying both the sides by iota. So what we will get is I into E is equals to I into omega into h cross. Correct? So I am writing over here. So what? I into omega is h cross divided by, sorry, this would be rather I into E divided by h cross. Correct? Any doubt? No. Correct? Now suppose this is equation number 3. So from 2 and 3
2 and 3, what we will get is del psi by del t is equals to del psi by del t is equals to minus I into E divided by H cross I into E divided by H cross. There is no problem in it. There is no problem in it. So I into E divided by H cross I into E divided by into psi factor. So what we will get is del psi by del t by del t into H cross divided by minus iota is equals to E times of psi, correct? Therefore, suppose I am multiplying and dividing by iota terms, so of course numerator and denominator both, so I would be getting H into iota divided by minus I. This one was previously, and I am again multiplying by iota into del psi by del t. This I would be getting E psi, correct? So this is H cross into iota. What iota square is? What is the value of iota square is -1, and there is previously I was having -1 also. So -1 into -1 would be +1 into del psi by del t. This is equals to E into psi. So now suppose I am giving it equation number 4. Now you can predict it very well from equation 1 and equation 4. The right side of the both equations would be same. So from this we can say that the left hand side of both the equations would be equal. So from I am rewriting it from equation 1 and 4, we can say what? Minus h cross square divided by 2m minus h cross square divided by 2m into del 2 psi by del x2 plus v psi is equals to h cross iota into del psi by del, I think there, yeah, del t. Okay, now therefore this is, in this equation you can say there is a time term, time dependent term. So of course this equation would depend on time. So this is your final equation, which is the thing for which we were looking for, that is time dependent Schrodinger equation. So this is your final answer, that is h square divided by 2m into del 2 psi by del x2 plus v psi h cross I del psi by del t. This is our vision, this is our time dependent Schrodinger equation. That's it from my side. Thank you.